the nation came alive at HECT School Anjanapura during the grand celebration of the 77th Republic Day of India along with the annual school day, organized by Hussain Sub Educational and Charitable Trust. The event reflected unity, culture, education, and patriotism. The program began with pride and respect as the national flag was hoisted by Srimanthi Lakshmi Vajramuni, wife of the legendary Kannada film actor and iconic villain of yesteryears, the late Sri Vajramuni. She was joined by Noor Pasha, trustee, and secretary Muhammad Hashim Shahi, along with school members and staff. As the tricolour fluttered high, students and parents stood together filled with national pride. The atmosphere echoed with patriotic songs, inspiring speeches, and meaningful messages about the future of young India. Children from all standards actively participated in cultural performances, colorful dances, soulful singing, and patriotic presentations beautifully showcased talent, confidence, and discipline. Each performance reflected the values nurtured by the school since its strong foundation. Teachers were honored for their dedication, commitment, and contribution in shaping young minds. Their role in guiding students academically and morally was appreciated by parents and guests. Parents expressed happiness and pride watching their children perform confidently on stage. They shared appreciation for the quality education and caring environment provided by HECT School. The management also highlighted upcoming developments with major improvements planned in school infrastructure. Modern facilities, enhanced learning spaces, and better amenities are on the way to support holistic education. With admissions now open for the academic year 2026-27, HECT School and Madrasa Hussainiyat-e Uloom, established in 1957, continues its journey of educational excellence. Located at Anjanapura 2nd Block West to Tirhalli Hobli, Bangalore South, the institution remains committed to nurturing responsible citizens of tomorrow. The 77th Republic Day, an annual day celebration, concluded with joy, unity, and hope, leaving behind memorable moments for students, parents, and teachers alike. से एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे मुनव्वर जमा साहब की तरह इंशाल्लाह। स्टेज पर जाओ, स्टेज पर जाओ। ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಸರ್, ನಾನು HECT ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಲೇಟ್ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ವೈಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು 150 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು IPS ಆಗ್ತೀನಿ, IAS ಆಗ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಏಮ್ ಏನು ಸರ್? ಮುಂದಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಥರ? ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಏನಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು IPS ಆಗಬೇಕು, IAS ಆಗಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. उनकी भी एक मुस्तकबिल बनना है, बच्चों की मुस्तकबिल बनना है. इसके बच्चे भी बहुत मेहनत कर रही, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद भी कर रही. इंशाल्लाह हमें वहाँ तक भी लेकर जाएंगे. मेरी दरख्वास्त है कि पेरेंट्स हमारा साथ देंगे. इंशाल्लाह हमें वहाँ तक लेकर आएगा, इंशाल्लाह छोड़िए इंशाल्लाह. सर, कौन सी स्टैंडर्ड से है अभी? उनको फीस भी कैसा है, क्या तरह है? फीस का हमें 1000 रुपये स्कूल फीस रखी, 600 रुपये वैन की फीस रखी. बच्चा ट्रस्ट की तरफ से हमें थोड़ा ये कर लेंगे. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು IAS ಆಗ್ತೀನಿ, IPS ಆಗ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಶಾಲೆ ಇದು?
ಸರ್ ಇದು ಅಂಜನಾಪುರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ HECT ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, IS ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, IPS ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, KS ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಓದ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಎಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, LLB ಮಾಡಿ ಲಾಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೀಚರ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ HECT ಯಾವ ಶಾಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोले एजुकेशन दो, APJ अब्दुल कलाम बोले एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं कर सकते करके उसके पीछे हमें भी बड़ों के पीछे मेहनत कर रही. इंशाल्लाह बच्चे भी वहाँ तक जाते इंशाल्लाह. ये तरक्की करने की पूरी उम्मीद है हमारे ट्रस्ट की तरफ से इंशाल्लाह. और अगला साल के वास्ते हमारे दाखिले भी शुरू हो जाए इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दाखिले हमारे आ गए इंशाल्लाह. वैन पूरा चलते सर? वैन बच्चों को हाँ, अब हमारे पास 3 वैन आई इंशाल्लाह. आइंदा साल हमारे बसा भी आती, क्योंकि आइंदा साल के वास्ते हमारे 500 बच्चों का दाखिला है. उसके वास्ते बसा का भी इंतजाम करी हम इंशाल्लाह. और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है इंशाल्लाह, वो भी करेंगे इंशाल्लाह. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೂರ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ HECT ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जो HECT स्कूल में आज में रिपब्लिक डे बनाया, क्या कोशिश रही कि आज नूर पाषा में आज तालीम के लिए जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज हमारे लिए बड़ी और खुशी और मुसर्रत का मौका है कि आज हम तमाम पूरे हिंदुस्तानी रिपब्लिक डे मना रहे हैं. 70 पर 7वां ये रिपब्लिक डे है. इसी दिन हमारे मुल्क का दस्तूर और क़ानून बना ताकि हर एक यहाँ अपनी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब पर चले और ज़िंदगी गुजारे. माशाल्लाह ये हमारा HETC स्कूल चल रहा है. हमारे स्कूल के ज़िम्मेदार अलहाज नूर पाशा साहब दामद बरकातुहुम हैं. माशाल्लाह इनकी ये कोशिश है कि यहाँ जितने भी बच्चे यहाँ स्कूल के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से ये बच्चे IPS, IAS और बड़े बड़े डिग्री लेकर यहाँ से बच्चे निकले. इनकी ये कोशिश है. माशाल्लाह दिन और रात ये कोशिश कर रहे हैं और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस स्कूल को ता क़यामत तक जारी व सारी रखे और हमारे हाजी साहब के जो इरादे हैं और उनके जो हौसले हैं अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाए. आमीन. तालीम के लिए थोड़ा किस तरह तालीम में रिपब्लिक डे मनाया? तुम्हारा नाम से शुरू करो. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Jabir. I am one of the management of HECT school. यहाँ HECT स्कूल में बड़ी स्कूल्स की तालीम दी जा रही है, जैसे क्राइस्ट स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल. इन स्कूल्स के जो तालीमात है वो यहाँ हम HECT स्कूल में फराहम कर रहे हैं. आगे किस तरह बच्चों को तालीम दिया? और इंशाल्लाह हमारा इरादा बच्चों को बुलंद मकाम मर्तबों तक पहुँचाना है, ऑफिशियल्स बनाने का, IAS, IPS बुलंद मकाम तक इंशाल्लाह हम बच्चों को पहुँचाने की फिक्र कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. तालीम किस तरह टीचर्स और इन आपके जी तालीम किस तरह बच्चों को दिए जा रहे टीचर्स और
यहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। कुरान, हदीस, शोबे हिफ्ज, दुआ, सुन्नत, दुनियावी तालीम, असरी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ असरी तालीम भी दी जा रही है। और यहाँ कौन सी क्लास है और बच्चों को टीचर्स और ये बच्चों की ये किस तरह की है? अभी इस साल यहाँ किंडरगार्टन, पिछले साल किंडरगार्टन से शुरू करे थे, अभी इस साल इंशाल्लाह 10th तक स्कूल बनाई जाएगी और जो है हमारी यूनिवर्सिटी बनाने का भी हमारा इरादा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम शुरू होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे असातिज़ा हैं हमारे स्कूल में, मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से अपना पढ़ा हुआ इल्म जाहिर कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए आपको? मैसेज ये है कि आप हम अपने बच्चों को HCT स्कूल में ले आइए, इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे। दुनियावी तालीम से भी आरास्ता कर देंगे, दीनी तालीम से भी आरास्ता कर देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम वालिदैन हमारा साथ दें, बच्चों का साथ दें। अभी स्कूल वैन्स की सहूलत है, अभी आने वाले साल में जो है बसों की सहूलत रहेगी इंशाअल्लाह। Name is Muhammad Ali, and I am here teacher in this school, and for the last 5 or 6 months we are teaching, and when those children were in this school at the time, they didn't know anything, but now mashallah they have learnt a lots of things, and right now you have seen many activities and programs carried out by the children. All these doesn't happen in vacuum. There are a lots of efforts and hard work from this school, and our aim is to bring your children to a successful point, like IS officer, IPS officer, or doctor, or engineer, or whatever he wants or she wants to become. We are here to support them, and we are supporting, and inshallah we will keep supporting them, but we need your support. Your support means support, parent supports. Without parent support we cannot do all these things alone. We need, for example, if a parent is sleeping till morning 6 or 7 o'clock, then we can imagine what will be the result of his children. So parents has to be active, then only he or she has to take care of his children, that what she is doing, what she is reading, what she was, what her children was, and what is her children now. So all these things parents should realize. All parents should recognize that what my children was before going to HCT school, and what are my children now after going to HCT school. And they should come to our school to get a progressive report about their children, and they should walk step by step along with us. This is all my request to all the parents, and I hope inshallah I will get support from all the parents. Thank you. बताइए सर, क्वेश्चन बोलो। HCT स्कूल में एजुकेशन का किस तरह सिस्टम है, बताइए। Actually, education is the main weapon through which we can win the world. Because of education, because of education, we will achieve to a high level and high position. And we have seen around the world, we have seen around Karnataka state, and we have seen that education, after looking after all these things, we have noticed that education like what is given in Japan, or what is given in America or in France, and what the education is being given in top 10 schools, we will give all those education in this school. This is our planning. This is our planning to achieve the education system, because education is the main thing through which we can make the future of the children. So before educating children, we must know how to teach them. We have seen like other countries, we have seen, as I said, that Japan, as I said, so the citizen of Japan, they are very educated.
And as we have seen that top 10 school is in Bangalore, and our effort is to give education better than the top 10 school. This is our aim, to give better education than the top 10 school. What's the different method you are teaching in this school? As I said to you that we have collected many methods, like we have collected from Japan, teaching the student by playing, teaching the student by talking to them, by communicating to them, not by taking a stick and just memorizing them. No, we are planning to teach them by understanding, by doing the physically, by playing, and by playing with teachers, and by playing by learning. These are the policy and the methods we are going to teach. तालीम का किस तरह एक ये है जी, अभी हमें शुरू करके 7 महीने हुआ। आप भी देखे हैं और सुने भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चों को ABCD नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीना में हमें बच्चों के पीछे इतना मेहनत करें। अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 मिनट आप जो इंग्लिश में स्पीच करते, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी करते। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह के टीचर्स और क्या डिफरेंट मेथड है बच्चों की तालीम के? हमारा जो है दूसरे स्कूल से कुछ अलग ही है, जैसा कि यूनिक बोलते, हमारा कुछ अलग ही है तालीम, और मेहनत भी हमारी अलग ही है। तो आइंदा हमें तालीम ऐसा करेंगे जैसा हमारे हेड मास्टर ने बताया जापान की तालीम, हम इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। आइंदा साल बच्चों को स्कूल में पढ़ा के होमवर्क भी हमें हैच करा के भेज डालेंगे। ये हमारा प्लानिंग है इंशाल्लाह। आपका एक ये है कि पेरेंट्स को बर्डन कम हो, या पेरेंट्स को बर्डन कम हो, और टीचर्स यहाँ अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चों? नहीं, टीचर्स हमारे मशवरा ऐसा दे रहे हैं कि बच्चों को हमें कुछ यहाँ कुछ गर्म करेंगे, तो तालीम पूरी यहाँ हासिल कर लेंगे। क्योंकि हमारा पढ़ाने का अंदाज घर के पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ा रही कि मशहूर 10 स्कूलों से अच्छी तालीम दे रही है हमें। उसके वास्ते हमारा पढ़ाना लहजा अलग रहता है, उनका ट्यूशन का लहजा अलग रहता है। इसलिए हमें ट्यूशन भी इंशाल्लाह हैज पढ़ा देंगे, होमवर्क क्या करना है इंशाल्लाह हैज करा देंगे इंशाल्लाह।